Assalamu alaikum class. Hopefully you'll be fine. As I promised, I've developed a session in the context of Pakistan, presenting the current situation. The aim of this session will be to see what type of environmental issues are there in Pakistan, whether they are causing severe impact on the community, on the society, on the people. What actions are being taken, climate actions that are taken to solve these issues, and whether we are in the right direction or not. And as you could see that mostly developed to the AI session, the AI tools. But what I've done is tell it with a lot of websites, uh, basically who are publishing facts and figures regarding Pakistan, that these are some of the major issues. A sort of a consensus is there, which is that I have filed and is currently presenting in front of you. And we could see that all types of pollution are there in Pakistan, including air, water, and soil pollution. Perhaps without a shadow of a doubt, we are one of the countries which is severely affected by climate change. Facing droughts, we also facing floods, we also facing a lot of change in the weather. Uh, Snowstorm, as you could recall, in the year 2003, Quetta and Balochistan had a snowstorm, snow burst that was sudden snowstorm that struck people who were basically moving in and out of the area. And the issues are therefore multifaceted, facing a lot of issues which are related to environmental changes. Uh, One of the biggest reasons is that we have immense growth rate population, specifically वो cities जहाँ पे हमने अर्बन एरियाज हैं और वहाँ पे हमारे पास स्कूलिंग और job opportunities हैं, people likely to settle around there, are highly densely populated. और immense population growth की वजह से uh, हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से वीक है. Also, we don't have the right waste management uh, system or approach available. Garbage is there, and we are not able to uh, manage the waste, neither the toxic, which is in or chemicals which is poured into the rivers and canals, and which is making it difficult for the life around water shores, not only for humans but also for plants and animal kingdom. We perhaps are one of the most vulnerable in terms of climate change, uh, where temperatures are soaring high, droughts, floods, and all. We're also facing the issue of poor air quality. Perhaps the most significant environmental issue that Pakistan has been facing in the recent years, especially in the last decade, is air pollution. Nothing new to the world. आपने अगर पिछला सेशन सुना होगा तो आप देखेंगे कि these were the similar issues faced by New York and other built-up cities when the industrialization was high and the automobile industries was growing. Therefore, a lot of cars were used, and therefore it was a logical outcome that they were combating the issue of the air pollution, industrial emissions, vehicles emitting CO2,
carbon, uh, also a lot of agriculture waste burning. One of the significant reasons Pakistan is facing air pollution. A very useful and systematic way the AI has developed this session. आप देख रहे हैं कि सोर्सेस बता रहा है पहले उन issues, फिर उन इम्पैक्ट्स बता रहा है और फिर उनकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी कोडिंग कर रहा है। यानी हमें एक और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक तरीके से गाइडलाइन प्रेजेंट कर रहा है कि ये इशू क्यों है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, फिर उसकी मेजर एग्जांपल्स क्या हैं। हम देख रहे हैं the impact of this poor air quality, air pollution has led to respiratory illness. Of course, uh, हम पहले ही अफेक्ट हैं कोविड की वजह से, कोविड की डिफरेंट वेव्स की वजह से, और हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी इलनेस इज वेरी कॉमन है। चेस्ट इन्फेक्शंस, lungs infection is very common. This is also because of the poor air quality. हम लास्ट में भी देख रहे थे particularly this material, the uh, item which is PM 2.5 is a major concern, which is very high in our air. And that's why most the winters we face the issue of the smog, in which life becomes miserable, very difficult to live in. And people who are mostly outbound, who are working outside, facing severe crisis. Although Pakistani population is more careless about any sort of these issues and constantly expose themselves to these outdoor demons, and therefore they are heavily affected. Uh, I suggested as last time that this is not a ranking, sort of a ranking नहीं है, बल्कि समरी है the top issues in Pakistan. तो ये नहीं है कि क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए क्या आप sorry for a little disruption. The water pollution is also ranked among the top issues in Pakistan. आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर जो डिस्चार्ज है उसका हमारे यहाँ कोई भी बैलेंस नहीं है। तो हम देख रहे हैं अनट्रीटेड सीवेज है और वेस्ट है वो कनाल्स और कनाल्स थ्रू वाटर्स ऑफ द रिवर्स में जा रहा है। इससे जो ड्रिंकेबल वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं पाकिस्तान में। इवन मैनी एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट कि आप जो पंप कर रहे हैं वाटर अंडरनीथ द सरफेस एट योर होम्स इन मेनी प्लेसेस, उसको जो टेस्ट किया गया है तो वो भी हमें पीने के काबिल नहीं मिलता, which is having insecticides, which is having toxic waste, therefore are injurious to health. Water scarcity is also an issue. Estimated the water is not easily available to people, and that's why they need to travel kilometers to find clean and tidy water. Even they are using dirty water for their regular drink purposes, and still uh, life is becoming difficult for people who are far away from water resources. आप देख रहे हैं many industries are pouring toxic particles, waste, industrial waste directly into the
canals and in rivers. So this is damaging the natural habitat of the rivers, but also making them water toxic, and therefore the water, this pure water and clean water, which is a basic human right, is not available in Pakistan. I think yesterday we also looked at one of the issue that is causing these floods, but also a sudden excessive flow of water downward from the hilly areas, because we're facing this issue of deforestation, illegal logging, agriculture expansion, urbanization. These are one of the major issues. हम देख रहे हैं कि हमने अपनी कॉलोनीज को बढ़ाने के लिए, लिवेबल करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को कट किया है, और इसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, एनिमल्स प्लांट किंगडम को काफी प्रॉब्लम है. सॉइल इरोजन देयरफॉर इज अ लॉजिकल रिजल्ट टू दिस, यानी वो सॉइल जो है वो फिर फर्टाइल नहीं रहती, ग्रोथ काबिल नहीं रहती, उसकी वजह से आप वहाँ फूड आइटम उगा नहीं सकते. और once these green forests is net blockage to CO2 है, कार्बन ऑब्जर्व कर रहे थे और ऑक्सीजन एनरिच थे, उसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस एमिशन इफेक्ट का सामना है, ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेनी वेज है. हम देख रहे हैं कि तेजी से दरख्त काट रहे हैं हम, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में बहुत प्रॉब्लम है. आपने शायद सुना होगा कि फॉरेस्ट माफिया, हमने हमारे पाकिस्तान में बहुत अरसे से ये इशू है कि फॉरेस्ट कटिंग है इलीगल, वो काफी सपोर्ट करते हैं बहुत सारे सर्कल्स. जहाँ उनको उनको स्टॉप करना चाहिए, वहाँ वो perhaps partner to this illegal activity, and therefore creating a lot of destruction in Pakistan. I think there is a huge concern across the globe regarding climate change, but Pakistan is not far behind in terms of climate change effect. हम बहुत सारे सिग्निफिकेंट रीसेंट इवेंट्स में इसको देख चुके हैं. वैसे तो सिवियर फ्लड्स हम फेस कर रहे हैं, फिर हमने drought का सामना भी है, पर जो ग्लेशियर्स हमारे आउटबर्स्ट कर रहे हैं वो भी एक फिनोमेना है विच इंडिकेट दैट ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी टेम्परेचर राइज है, वो हमारे स्नो रिसोर्सेज को भी डिस्टर्ब कर रहा है. और हम देख रहे हैं कि इंडस की जो ओरिजिन है, रिवर की ओरिजिन, वहाँ जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट हो रहे हैं तेजी से, और उसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं. आई सम ऑफ द लेक्स केम इनटू जब ये ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, और आप उसमें देख रहे हैं कि जब ग्लेशियर आउटबर्स्ट होता है तो एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसमें बहुत सारी डेथ टोल भी, मोर्टेलिटी रेट भी काफी हाई रहता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है वो इतनी आसानी से रिकवरेबल नहीं है. सो देयरफॉर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस हैड हैपन, और हमने देख रहे हैं कि उसमें अनवांटेड जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनकी क्रिएशन भी है. और उसकी वजह से जो वहाँ की नेचुरल टेरेन था, यानी जो एरिया था, उसकी अपनी जो नेचुरल आउटलुक थी वो भी डिस्टर्ब हो रही है. अच्छा, सॉइल इरोशन और डिग्रेडेशन हो रही है, वाई? बिकॉज हमने एक तो डिफॉरेस्टेशन कर दी है, दूसरी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हमें इन मेनी वेज में आ रहा है. ड्राउट्स हो रहे हैं, कहीं हमें एक्सेसिव फ्लडिंग आ रही है, वजह से हमें सॉइल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, और उसकी वजह से वो जो भी लाइफ की सपोर्ट है उसको दे नहीं पा रही है. तो ये पाकिस्तान में एक सीरियस क्राइसिस नजर आता है. वेस्ट गार्बेज के हवाले से हम बहुत दफा डिस्कशन किए हैं. हम देखते हैं कि बहुत सारी सिटीज सिवियरली हर्ट है इस हवाले से. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, और इसकी वजह से हमें लैंड, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज के अंदर हमें ये प्लास्टिक बॉटल्स और गार्बेज अंदर आती है, जिसकी वजह से हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट की ओवरऑल कंडीशन है बहुत ही पुअर है. हमारे पास प्रॉपर डंप साइट्स नहीं है, लैंडफिल्स नहीं है, और इसकी वजह से हम इन गार्बेज और वेस्ट को ओपन में छोड़ देते हैं.
which causes multiple effects. आप देख रहे हैं कि हमारी अर्बन सिटीज की हालत कुछ ऐसी है जिसमें वाटर डिपॉजिट्स हैं जिसके अंदर गार्बेज है, और इसकी वजह से अ, जो कार्बन वो नॉर्मल कम्यूट लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को लिवेबल नहीं रहता। ऑल्सो इन सीजन्स वेयर इंसेक्टिसाइड्स आर हाई और इन्फेक्शन जो है वो पीक पर होती है, हम देख रहे हैं these are the sources of dengue and other problems like this. Malaria and dengue very common because multiply फ्लरिश इस तरह की वेस्टफुल एरियाज के अंदर, और डिजीज और इन्फेक्शन जो है वो उसका रेट एक्सेसिवली हाई रहता है। ऑल्दो देयर आर मल्टीपल मोर इश्यूज इन पाकिस्तान जो कि इवेंचुअली हम आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स जगह जगह मुख्तलिफ केसेस में भी देख रहे होंगे, बट among the other is noise pollution, the issue of the natural disasters, of course overpopulation and lack of awareness and enforcement है जो कि हमें हर्ट कर रही है। मैंने सम अप कर दिया। नॉइज पोल्यूशन इज वेरी कॉमन, स्पेसिफिकली cities where population is high, वहाँ हमें नॉइज पोल्यूशन की इश्यू को समझ सकते हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इवन मुल्तान has now have excessive traffic, and therefore urban areas के अंदर हमें कांस्टेंट नॉइज पोल्यूशन आती है, कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अंदर आ रही है जिसकी वजह से कॉजिंग स्ट्रेस है, हेयर लॉस का इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और वर्ल्ड में एक हाईली रिकग्नाइज्ड इशू कंसिडर किया जाता है और एनवायरमेंटल इशू माना जाता है, पाकिस्तान में भी। हमारे यहाँ लोग अवेयर नहीं है कि हमें क्लाइमेट के हवाले से क्या करना चाहिए, उस हवाले से कंसर्न्स हैं। दैट्स व्हाई हम देख रहे हैं lot of consortiums are trying their level best, lot of platforms trying their level best to create this awareness. आप देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर फॉग हैज बीन बिकमिंग अ डीमन इशू पाकिस्तान में, बहुत ही सवेयर हो गया। इस हवाले से गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन प्लान्स भी किए लेकिन वो इतने ज्यादा यूजफुल साबित ना हुए। सो दिस particular webinar session was conducted by PIDE, which is one of the institution in Pakistan. उसका टाइटल देख रही हूँ, कह रहा है Killing smog in Pakistan causes impact and way forward। नहीं, अभी तक हम इस पोजीशन में नहीं आए कि जज कर सकें कि मेन कॉजेज क्या है, हम कंसेंसस बिल्ड नहीं कर सके, हम अभी अवेयर नहीं है, हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फेज में है, यानी सीख रहे हैं कि इस इशू को कैसे मैनेज करना है या क्या है, और फिर देखना है कि उसका सीरियस कहाँ कहाँ आ रहा है और उसको कैसे टैकल करना है। तो इस लिहाज से कंसोर्शियम्स अपनी अपनी एफर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एसपीआई ने ये एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की नेस्ले की ताउन से, विच इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि पाकिस्तान ने भी रोल प्ले कर रहा है। एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, ईएसजी फ्रेमवर्क को सामने रखा और पाकिस्तान को असेस करने की कोशिश की। फिर देख रहे हैं कि प्रोग्रेस क्या है, चैलेंज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, यानी हम वे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज इन नोवे स्टेजेस है, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में है। फिर एक सवाल आपके से जरूर आ गया, गवर्नमेंट क्या कर रही है। आई थिंक क्लियर एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, और आप देख रहे हैं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बाय द करंट गवर्नमेंट, ये एक एम्बिशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान को एनवायरमेंटल कंसर्न्स के हवाले से एक बेटर स्टेट पर लाया जा सके। रीफॉरेस्टेशन की तरफ ड्राइव है, प्लांटेशन ड्राइव्स करने की कोशिश है। जो ग्रीन हाउस इमिशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के हवाले से न्यू रिस्ट्रिक्शंस और कंप्लायंस को इंश्योर करने की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन पाकिस्तान इस हवाले से एक एफर्ट नजर आती है। आई थिंक वी आर स्टार्टिंग slowly but surely looking forward there to these environmental issues, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी environmental जो इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएं।
इंशाल्लाह वंस वी बैक, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले सेशन में बिजनेस वर्ल्ड के केसेस को देखें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के केसेस को देखें, और उस लिहाज से बहुत सारी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम उनका जिक्र बारहा दफा सुनते रहते हैं, तो उनको एज अ रोल मॉडल केसेस के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, I think this organization is ranked among the top organizations in Pakistan, Engro, which is trying its level best to improve social and environmental skills. उस हवाले से काम कर रही है. पेल, विच इज पाकिस्तान इंजीनियरिंग लिमिटेड, बहुत ही अच्छा काम कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से भी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के हवाले से भी, और बहुत सारे सोशल कॉज इनिशिएटिव पार्टिसिपेट भी कर रही है. शल पाकिस्तान इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग मैनी वेज है. तो इंशाल्लाह आने वाले सेशन में हम बहुत सारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की इनिशिएटिव्स को देख रहे होंगे, और देखेंगे कि हाउ दे बी कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ड्स बिल्डिंग अ बेटर एंड ग्रीनर पाकिस्तान in the future. That's it as far as this session is concerned. Inshallah, we will be moving towards module two, taking up more important aspects. The module second will be taking up the phenomenon, which basically provide us a way of conceptualizing what is there in the environmental सस्टेनेबिलिटी कंसर्न. हम बहुत सारे फ्रेमवर्क देखने वाले हैं आने वाले सेशंस में, खासतौर पर बहुत सारी इंटरनेशनल मूवमेंट्स को देखने वाले हैं, और उनके हवाले से हम अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, हम कंसेप्ट देखने वाले हैं, द बॉटम लाइन इफेक्ट. दिस इज वन ऑफ द ways we could assess whether organizations are taking the right balance between maximizing profit but also taking care of the society, but also taking care of the environment as well. तो हम इन फ्रेमवर्क को आने वाले दिनों में देख रहे हैं और यहाँ से लर्निंग कर रहे हैं. सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक.